Dear students, myself Indu Sharma and I have brought for your first lesson Bade Bhai Sahab with English translation for all CBSE Course B students. I hope this English translation will make it easier for you to read the text. So let's start the lesson Bade Bhai Sahab. But before, let us first make some information about the author of the lesson. Who has written it in very beautiful words. प्रेमचंद 1880 1936 31 जुलाई 1880 को बनारस के गरीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बम्बई, मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी हैं। प्रेमचंद 1880 and 1936, born on 31st July 1880 in Lamhe village near Banaras. Dhanpat Rai wrote in Urdu as Nawab Rai and in Hindi as Premchand. Personal dealings and correspondence continued under the name Dhanpat Rai. The first collection of short stories published in Urdu, Soze Watan, was confiscated by the British government. Apart from doing school mastery, inspectory, managerial or livelihood, he also edited major magazines like Hans, Madhuri. He also spent some of time in the film city of Bombay, Mumbai. But he did not like it, although many of his works were made memorable films. Although many of his works were made memorable films, आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। The unmatched figure of the common man's sorrow and pain. Premchand was called Katha Samrat, novel emperor during his lifetime itself. 8 अक्टूबर 1936 को में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र अपूर्ण। He died on 8 October 1936. All the stories written by Premchand are compiled in 8 volumes titled Mansarovar. His major novels are Godan, Gaban, Premashram, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा एंड मंगलसूत्र। पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें भी यूं ना टोकता। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता।
घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उसे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। Lesson entry. You are young now, so don't put your hand in this work. On hearing these many times, it comes in the mind of children. I wish if we were grown up, no one would interrupt us like this, but do not be in this illusion, because growing up does not give the right to do anything. Sometimes the elder of the house has to restrain himself from being involved in those works which other boys of the same age continue to do fearlessly. You know why? Because some those boys are not older than anyone in their house. There is also an elder brother in the present lesson who is small, but there is another brother younger than him in the house. Being only a few years older than him, great expectations are made of him. Being a grown up, he himself also wants and tries that whatever he does, he should act as an example for the younger brother. In order to maintain this ideal condition, Bhai Sahib's childhood disappears. बड़े भाई साहब। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन उम्र में 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। बड़े भाई साहब। My big brother is 5 years older than me, but only 3 degrees ahead. He also started studying at the same age as I did, but he did not like to act hastily in matters of importance like education. He wanted to make the foundation of this building very strong, on which the success life could be built, means on which a luxurious palace could be built, means success life. 1 year's work has done in 2 years. Sometimes it took even 3 years. If the foundation itself is not solid, then how can the house become profitable? मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरे तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता में इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। I was 9, he was 14. He had full and birthright to watch over me, and it was my decency to understand his order as law. He was very studious. वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही
नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। He was very studious by nature. He would always sit with the book open and perhaps to give rest to the mind, he used to draw pictures of birds, dogs, cats on the margins of the book on the copy. Sometimes the same name or word or sentences would be written 10-20 times, sometimes imitating a line again and again in beautiful letters. Sometimes he used to compose words which had no meaning, no harmony. For example, once I saw this inscription on his copy, Special Amina, brothers, brothers, in fact, brothers, brother Radhesham, Shrivt Radhesham. For an hour after this, a man's face was made. I tried to a lot to make some sense out of this riddle but failed, and did not dare to ask him. He was in the 9th group. I was in the 5th. It was a big deal for me to understand his compositions. So, dear students, in the first paragraph for this lesson, the author wants to tell us that what is the age difference between his elder brother and him, and some of the qualities of his elder brother which he knew well, like he was very hardworking and studious in his studies, and some such qualities that he probably overlooked because he respected his brother because of the age difference. मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इस उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। I did not feel like reading at all. Sitting with book for even 1 hour was impossible. Whenever I got a chance, I would come out of the hostel and come to the ground and sometimes throw bubbles, sometimes fly paper butterflies, and if I found a companion, then I have to ask for, are you ever climbing on the boundary wall and jumping down? Sometimes the riders on the gates are enjoying the motor car driving it back and forth. But upon coming to the room, seeing the Rudra form of Brother Bhai Sahab, his life would have dried up. His first question would have been, where were you? Always the same questions was always asked in the same voice, and I had only silence to answer it. I don't know why it didn't come out of my mouth that for a while was playing outside. My silence used to say that I accept my guilt and there was no other remedy for my brother but to greet
mean words mixed with affection and anger. इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गैरा नत्थु कहरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है, बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? If you study English like this, you will continue to study for the rest of your life and not a single word will come. Reading English is not a joke. One who wants to read it, not era gera nathu kera, all become English scholars. Here night and day, you have to burst and blood has to be burnt. Then somewhere this knowledge comes. And what comes? It comes to say yes. Even great scholars cannot write pure English. I say you are such a snail that I you don't take a lesson that you don't take a lesson even after seeing me. How much I work, you see it with your own eyes. If you don't see, then it is the fault of your eyes. It is the fault of your intellect. Have you seen it? Cricket and hockey matches are held every day. I don't pass. I always keep studying. On that too, I spent 2 to 3 years in one grade. Still, how do you expect that? You will pass like this by wasting time in sports. It takes me only 2 or 3 years. You will rot in this grade for whole life. If you have to lose life like this, then better go home and have fun playing gulli danda. Why do you waste your hard earned money? Why do you waste your father's hard earned money? यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने आप में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। I used to shed tears after hearing this taunt.
What was the answer? I have committed the crime. Who was to bear the scolding? Pastor was adept to preaching. He used to say such a thing, such a ham, that the pieces of my labor I would break my I would I would break into pieces and my courage would break. I could not find the strength to work hard in this way. And in that disappear for a while, I started thinking, why not go home in the work which is beyond my power? Why should I spoil my life by putting my hand? Would have made a timetable. How do I start the work without preparing a plan in advance? The items of sports in the timetable would fly away completely. Wake up at 6 in the morning, washing hands, having breakfast, sitting down to read. 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। English till 8, mathematics from 8 to 9, history from 9 to 9:30, then food and school, and 3.5 hours rest. After returning from school, geography from 4 to 5, from 5 to 6 till grammar, walk in front of the hostel for half an hour, English composition from 6.5 to 7, then translation from 8 to 9, after eating, Hindi from 9 to 10, miscellaneous subjects from 10 to 7, then rest. So students, I think in this paragraph reminds you something, because whenever we become careless about our studies, so we also get to hear scolding from our elders or parents. After hearing which, we also cry and get angry, because we think that what we are doing is doing right. Similar behavior of the author was also there. मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। But it is one thing to make a timetable to implement, it is another thing to start ignoring it.
On the very first day itself, the pleasant green of the field, the light gust of the winds, that jump of football, that gamble of kabaddi, that quickness of volleyball would inevitable and I forget everything as soon as I went there. That murderous timetable, those blindfolded books no one remembers, and Brother Bhai Sahib would have got an opportunity for advice and trouble. I would run away from their shadow, try to stay away from their eyes, get buried in the room so that they don't know. His eyes turned towards me and my life came out. There was always a pointed sword hanging over the head. Yet, as a man in the midst of the death and calamity remains in the bondage of illusion and illusion, I could not give up the game even after being reprimanded or and thrashed. सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लो। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ लिए? There was an annual examination. Brother failed, I passed, or came first in the rank. There was only a gap of 2 years between me and him. I came in my heart I should take a dig at my brother. Where did that penance of yours go? Look at me, keep playing with fun, and I am also on top of the ranks, but he was so sad that I felt deeply sympathetic to him, and the thought of sprinkling salt on his wound felt shameful. Yes, now I have some pride in myself, and my self-esteem also increased. That pride of Brother Sahib did not remain on me. Freely started participating in sports. The heart was strong. If they hurt me again, then I will say clearly, which arrow did you shoot by burning your blood? I have come first in the ranks. While playing and jumping, in spite of not having the courage of express this arrogance with the tongue, it was clearly visible in my complexion that the terror of Bhai Sahab was not on me. Bhai Sahab sensed it. His intuitive intelligence was very sharp and came first in the ranks. You are passed this year and came first in the ranks, then you have got your brain. But brother, pride is not of big and big.
What is your personality? You must have read the condition of Ravan in history. What lesson did you take from his character? Or just read? Just passing the exam is not a thing. It is the real thing. Students, listen here. The writer was the student of a sharp intellect and therefore he did not need to devote much time to his studies. So he used to come first in the class. Here the author also revealed the name of the another character, he is Ravan. Do you know who Ravan was? Who was Ravan? Ravana was the king of Lanka. When Shri Ram was the king of Ayodhya, Ravan was a very knowledgeable and skilled warrior. But he became proud on this matter. He started torturing his own people, own public, and he did the biggest wrong thing, that he kidnapped Mother Sita. Otherwise, Sri Ram had to kill him. That is why the author has said that pride is not of elders.